So, Assalamu alaikum, guys. How are you? Hope you are fine and doing well. Walaikum Assalam, ma'am. Okay, so today is our second lecture, and I hope you got the point, and I hope you got the first lecture. और आप सबने first lecture attend किया होगा उम्मीद है, and I hope you have enjoyed that lecture and slides and information, and I hope you got something new information from that. Okay, so today is our second lecture, that is self-introduction. How would you introduce yourself? How would you try to convince somebody के आपके बारे में, how are you, who are you, किस तरह से आप बता सकें? Okay, second slide, yes. Third one, please. So before starting our self-introduction lecture, I would tell you कि आज थोड़ा small कुछ short lecture होगा, लेकिन information I think you will enjoy. And जिसने first lecture नहीं लिया, उनके लिए again I want to revise the rules of the class. I have just told you before, told you yesterday. So I hope आप अभी notebook और pen लेकर बैठे होंगे. And because I have already said that this is mandatory for this class, and if you really want to learn something, if you really want to have an outcome from this lecture, from this course, so you have to keep following these rules and regulations of the class. Thank you. और जिसने नहीं भी लिया हुआ, so I'm again repeating that this is mandatory, and I will be giving some tasks, some exercises, maybe some, you can say, activities regarding this lecture. So you have to keep a pen and a notebook or a notepad with you guys. Again, avoid extra use of microphone, and I hope you are, and I know that you are good students. आपने कल भी मुझे ऐसा कुछ feel नहीं करवाया कि आप mess create करने वाले students हैं. I also enjoyed to have a fun class with you guys yesterday. Students are supposed to talk in English. Anybody want to ask a question? जी. किसी का mic खुला था, so I thought anybody wants to ask a question. Khair, yes, I was talking about participation as must, और आज की participation में आपने कुछ written task मुझे करके दिखाना है. Maybe after the lecture, or maybe अगर हमारे पास time बचे in the lecture, we will do at the end of the slide, right? So do not take the class for granted again. Attendance matter karegi, or come on the time. And yes, be active in the class until, if you will not be active, definitely you will not get anything. Logical and thought-provoking questions agar aap banayenge, to I'll be appreciating that person, that student. And yes, the last one, cooperation is must. Next slide, please. So, self-introduction kaise karwaya jaye? Have you ever felt nervous while introducing yourself? Yes, 100 times, because I myself was a student, and I myself felt a lot of nervousness while, introducing myself. So, I understand this problem ke aksar hame ye problem darpesh hoti hai. Next slide, please. So, yesterday I was talking about कि हम देखेंगे, we will ponder at क्या ये ज़रूरी है, क्या हमें ऐसा चाहिए करना कि हम कुछ अपने इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस रट लें, मेमोराइज कर लें फ्लुएंटली, जो हम बोल सकें. बट यस, ये एक अच्छा तरीका है, एंड आई वुड से यस, यू शुड डू दैट, एंड यू शुड मेमोराइज फ्यू लाइंस जो कुछ अट्रैक्टिव सी, कुछ इंटरेस्टिंग सी हो. एंड जब भी आपसे कोई इंट्रोडक्शन आप मांगे, आप fluently you can say like who are you, and a very brief, concise, clear, or maybe precise introduction of yourself. So self introduction एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पहला impact होता है, very prior thing जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं. So I was talking about yesterday, I just told you that informal and formal introduction दो types के होते हैं,
or what includes on formal and informal introduction? Definitely formal introduction होगा वो introduction जो आप इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में या किसी ओरल वाइवा में देते हैं, डेफिनेटली, या अपनी क्लास प्रेजेंटेशन में देते हैं अपना formal introduction. And informal introduction will be informal in the in the informal way of your style, the introduction of yourself, and एक इंफॉर्मेशन जो आपकी है बेसिक वो एक इनफॉर्मल स्टाइल में होगी, ठीक है. लेकिन इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे वो किस तरह से. हाउ टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन सडनली यू गॉट द सिचुएशन टू इंटरैक्ट एंड डिस्क्राइब योरसेल्फ, योर पर्सनैलिटी इन द पब्लिक. ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है कि इन पब्लिक आपको कहा जाए इन द क्लास मे बी और इन द ऑडियंस कि जनाब खड़े होइए और ये चीज आपने डिस्क्राइब करनी है, तो डेफिनेटली आप उस चीज से आने से पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि दिस इज मी एंड दिस इज हाउ वी गॉट हियर एंड दिस इज what we are doing here and I am here for this purpose. तो उस सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो बेसिक फर्स्ट पार्ट है उसको आपने सही से डिस्क्राइब करना है. How to cope up the fears of the interaction. So अगर आप खुशकिस्मती से पेन या पेंसिल को साथ लेके बैठे हैं तो write down this question and I will ask this answer in the end of the lecture. Okay, what do you think? What in your point of view that you think कि हम किस तरह से cope up कर सकते हैं fears को? I will elaborate something else. इसके अंदर मैं कुछ addition ये करना चाहूँगी. लेकिन बाकी आप इसको क्वेश्चन को आंसर आप खुद टैकल करेंगे और मुझे एट द एंड बताएंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि कोप अप हम फर्स्टली इस तरह से कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. ये तो इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अपना जो कंफर्ट लेवल का जोन है, अपना कंफर्ट जोन है, उससे आउट ऑफ द जोन आया जाए. और जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, जाहिर है आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा पब्लिक में खड़े होकर या कुछ भी कहना या अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना. तो जब तक आप कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आएंगे तब तक you will not be able to interact or you'll not be able to cope up that fear. So you'll not be able to kill that fear, right? तो ऐसा है कि I just started the answer और इसको complete आप अपना different answers I would like to know in the end of the lecture. Which points should you memorize about your basic self-introduction? ये हम आगे देखने जा रहे हैं. Next slide, please. So, yes. So this is the process जिसके अंदर दो categories major हैं. सबसे पहले तो who are you? You have to define yourself, and how are you qualified? Who are you? Definitely, you will enter the room. If you are in the interview, you will enter the room and say hello or assalamu alaikum or good evening or good afternoon. You have to keep an eye on the watch. Keep an eye on the clock. कि अभी क्या time हो रहा है, उस हिसाब से good afternoon, good noon, and good morning you would say, good evening maybe. So after this greeting, you would say, yes, thank you for giving me the opportunity, or thank you for inviting me. और या तो वो बंदा जो इंटरव्यूअर है, he can say कि thank you for being here, and you would say you're welcome sir. So this is how we go here, ठीक है. And then the third is your name. Greetings and thank you, and then your name. And the second category is how are you qualified. So you will tell the position and company. Maybe different institution, maybe different university, maybe you are still in the studies. अभी आप studies ही कर रहे हैं, अभी आपको job नहीं करने का मौका मिला, तो you will skip this point. लेकिन if you have done somewhere any job, any sort of job or any teaching or maybe anything like that, so you will tell your position that I've been that and that, and I've been performing these responsibilities in that company or in that institutions.
So this will be the fourth point, and then qualification. ये बताने के बाद सबसे पहले आप अपना नेम बताने के बाद अपनी qualification नहीं बताओगे. आप ये बताओगे कि hello, my name is फलां फलां, या my name is Mahanur, and I've been there at the RJ in Radio Zara, so I've been teacher in Beacon House School. Then मेरी qualification क्या है? ऐसे नहीं होगा कि पहले I will tell my qualification. It will, have a bad impact, or maybe it will not good. Okay, it will not look okay. Okay, then you will tell your qualification. Next slide, please. Okay, so you have to convince उस इंटरव्यूअर को कि आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, वर्सेटाइल है, and you are the person who is a sort of like easygoing person, right? I hope you are getting my point. कि जो ट्रबल क्रिएट करने वाला या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला स्टूडेंट या एम्प्लॉय होता है, उसको पसंद ज़ाहिर नहीं किया जाता. So definitely you will have to prove in your interview that you are easygoing person, and you will not create any conflict. और अगर आपसे वो क्वेश्चन मुश्किल भी कर रहा है तो आप उसको easy करके आंसर करें. ऐसा नहीं हो कि आप अपने एक्सप्रेशन से अपना इमेज बैड क्रिएट कर लें वहां पे. Solution oriented. अब इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर कि अगर एक इंटरव्यूअर आपके सब्जेक्ट से डिफरेंट सवाल करता है और ऐसा सवाल करता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं. समटाइम्स आर्मी इंटरव्यूज में, आर्मी वाइवा या आर्मी के लिए जो भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं आफ्टर ISSB एग्जाम, तो वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड यही जज किया जाता है कि आर यू अ पर्सन दैट इज सोल्यूशन ओरिएंटेड. वुड यू बी एबल टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम? वुड यू बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, think creatively in any problem or in any situation, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब घबरा जाते हैं. So these things will matter a lot. अगर आप इंटरव्यू में अपने आप को ये प्रूव कर देते कि आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, और अगर आप उस क्वेश्चन को इजी गोइंगली आंसर कर देते हैं, तो इट विल मैटर अ लॉट एंड इट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट. So this was a very crucial, like very important point in your self introduction, right? And basically in the interview, you will another thing, you will prove that you are determined, you are committed to your work, you are very much interested in your job, you are very much interested in getting this job. अगर आपको ये job ना मिले तो you will be not satisfied. अगर आप मतलब आपने ये, you have to prove that कि I am really much interested in this job, or I want this job, or maybe yeah, I'm talking about specifically in the interviews, maybe in the job interview, or maybe degree के लिए भी interview किया जाता है, maybe MPhil से पहले. So you have to be so much vigilant to tackle with this problem. Yes, team player. अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाता है जिसके अंदर आपने you will have to prove yourself कि how much you are active in team working and in team up task. So आपको ऐसी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन भी आपको टैकल करना पड़ जाएगा. तो you should be prepared for this question. Yes, creative. You have to be creative. I've already told you before. Creative mind, open-minded questions भी आपके ऊपर आ सकते हैं. Open-minded. You have to be so much vigilant there in the sitting in the seat, in the interview room. Enjoy working with others. So आपको ये भी एक proof देना पड़ेगा अपने बातों से कि you will enjoy your work with your team members and in the team and maybe in the office employees, all these things. Next slide, please. Take an exercise book and create. हाँ जी, तो पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन किया था पिछले स्लाइड में, वो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा. And I think, and I will hope that you will answer that in the end of the lecture. And yes, another question. No, this is the task, or ये assignment है, और I will give you 2 or 3 days इस assignment को, इस task को complete करने के लिए. Take an exercise and create exercise book and create at least 4 introduction that you would use use to introduce yourself. Sorry. So I'm giving you the 4 situations at the party,
in a formal situation, maybe interview, maybe anything like that. In an email आप करने लगे किसी को भी, maybe scholarship के लिए, or maybe कहीं भी admission के लिए, how would you tackle there, and how would you introduce yourself? And yes, in the inbox, in the DM, maybe in Instagram or maybe in Facebook. So create 4 introductions आप अपना करेंगे 4 situations में रखते हैं वो इसको. और here are some guidelines कि how would you tackle in your DMs. DMs आपको I think पता ही होगा, inbox को कहते हैं, maybe Instagram, Facebook, or probably Twitter, maybe, yeah, something like that. So all these social media platforms. Hey, I've been following you for a couple of years. I want to ask a question. Do you yeah. And in email, hey, this is Maria or Marina. Hey, this is Marina from Lingua Trip. ESD maybe company का नाम है. I was wondering if you or जो भी आपने question करना हो, starting ये है उसका. And in the end, you would say thank you. Next, please. I am originally from Russia, but I've been living in San Francisco since 2016. इसी तरह से अगर आप अपने ऊपर एग्जांपल लें कि I am basically from Bahawalpur, but right now I am living in Multan. I am originally from Bahawalpur, but I have been living in Multan. I have been, you will use present continuous, perfect continuous tense अगर आपने इस type का introduction अपना करवाना है तो ठीक है. I was born and raised in Italy, but yes, the other same type. But I moved to the United States 2 years ago. I grew up in France. इस तरह से आप अपना जो मैंने आपको पीछे 4 introduction बनाया कहा है, तो you will follow these sentences. Next slide, please. Yes. Hey, I'm Marina. I am a YouTuber and I have over 1 million followers. Next, please. ये गाइडलाइंस जस्ट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप जब अपना जो मैंने टास्क दिया आपको उसको किस तरह से आपने टैकल करना, you would have the idea that how would you tackle your introduction of 4 types, right? Okay, sorry for the interruption. I work for company name. I work for that company. I work for Islamia University of Bahawalpur for like number of years. आपने यहाँ पे लिखना है, I've been working for them for 5 years. ये भी आप लिख सकते हैं. And in an academic environment, I'm doing my MBA right now. जो भी आपकी डिग्री है, you will write there here. I'm in my 4th year of bachelor's program. I'm just about to graduate. I'm just about to graduate from a university. Yeah. Notifications आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. I don't know why. Class के time पर इतना discussion group के notifications, I can't understand this thing. By the way, this is a nonsense कि आप class में हैं नहीं और कब उसमें WhatsApp group में इतने active हैं. By the way, this is the 3rd last slide of the lecture. For the last 5 years, I have been a sales manager at, अगर आप experienced हैं, MBA के student हैं, so you would introduce yourself like this, leading the small sales team, and our team was awarded the best. जो भी आपकी achievement है, any certificate you have done, any courses, any short courses you have done, so you would mention that. ठीक है. Our team has awarded the best sales team of the year for 2 years in a row. Yes, the continuity को show कर रहा है. I have worked closely with clients and built some key relationships. कितना अच्छा, कितना intriguing ये है information है अपनी. I am an HR manager at जो भी company name है आपका, जो भी institution है, looking after the key function of recruitment,
compensation learning and development. I have over 5 year experience in this field, and we have been able to increase our employee productivity by 8% during this period. ये चीज़ आपको शो कर रही है कि आप अगर मुझे हायर करेंगे अपनी कंपनी में या अपनी इंस्टीट्यूशन में तो मैं आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ. नेक्स्ट प्लीज. इसी तरह से क्रिएटिव होकर आपने अपना इंट्रोडक्शन 4 टाइप्स के बनाने हैं. I was part of the research project on how modern technologies change the way of teaching in the future. इसकी मेरे पास बहुत अच्छी एक और एग्जांपल है, where we work with an edge tech company to evaluate the efficacy of some tech-based teaching interventions. Okay, so I was talking about any other example के यही स्लाइड रहने दें. थैंक यू. ये आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने इस जगह पर इस प्रोजेक्ट में काम किया है. द सेम वे लाइक अगर मैं किसी टीचिंग किसी भी अच्छे स्कूल में SPS में भी APS और मे बी बीकन हाउस और किसी भी अच्छे स्कूलिंग सिस्टम में अप्लाई करने के लिए टीचिंग सीट के लिए अप्लाई करूं तो और वो पूछें कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं या हम आपको क्यों हायर करें, अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यूवर्स करते हैं. सो आई वुड से कि सर आई हैव बीन द पार्ट ऑफ a research, yeah, I have done a research that how to be like how to speak like a native speaker of English, तो or how to tackle the error of English. अगर मैं उनको ये चीज़ बताऊं तो they will definitely hire me because sir, I would help your students to grow or to be groomed in their English skills. तो इसलिए आपको मुझे हायर करना चाहिए. इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो डेफिनेटली it will be a great and interesting thing of your interview and your self introduction. So any question? I think कितना time हो गया हमारे lecture को? Anybody would like to tell? Easy going person. 26 minutes. Sorry? 25 minutes. Okay, how can... Sorry, अब मैं ज़रा chat के questions पढ़ लूँ. How we can be easygoing person? Nice question. Easygoing person हमें इस तरह से होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई conflictual question किया, for example, I would take an example कि एक आर्मी का इंटरव्यू था, नेवी का इंटरव्यू था, तो उसमें स्टूडेंट को बुलाया और स्टूडेंट वहाँ बैठा हुआ था, 2 और भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे उसका, और सारी उसकी CV और एजुकेशनल बैकग्राउंड सब डिग्रीज सामने पड़ी थी टेबल पर. और उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप क्यों आर्मी में आना चाहते हैं? उसने कहा सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, या सर मैं आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन वर्क फॉर माय कंट्री. तो उनको उसके सामने वही ऑफिसर कहता है कि अच्छा, लेकिन आपके मैट्रिक के मार्क्स तो बहुत गंदे हैं, ये देखें, और वो ऐसे फाइल साइड पर रख देता है उसकी, या उसके सामने फेंक के मारता है टेबल पर. और इसी सिचुएशन में अगर वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन देता है, if he feels bad or if he reacts bad, तो definitely he will be rejected. ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था और ये एक रियल टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ और ये वाकई में ऐसा हुआ था. तो उन्होंने एक बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल सा सिचुएशन क्रिएट की, बड़ी ट्रबल उसके लिए क्रिएट की. उसको सिचुएशन में बड़ा नॉर्मल काम रिएक्शन देना चाहिए था. इजी गोइंग पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके जैसे ही फेस पे गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया कि सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया. इस तरह से आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ अ इजी गोइंग पर्सन, नॉट अ कॉन्फ्लिक्चुअल टाइप ऑफ नेचर you will not prove this. I hope you get the point. Ma'am, before MPhil, ma'am, kindly give an example of question like open mind question. यही open mind question की example मैंने आपको दिया है. Conflictual नहीं होना चाहिए आपको, narrow minded नहीं होना चाहिए आपको, हर situation के लिए be prepared रहना चाहिए. Ma'am, ये assignment PDF में बनानी है. No, you can make this on a paper with pen, no issue. We can take sentences from these examples. हाँ जी, बिल्कुल. Ma'am, tell please, like we are studying, so what extra should be in our interview? Beside name, qualification. I have given all the examples and all the demo also. What that 10 steps.